My lord, this case was lodged, my lord, on the written application of the Vigilance Department, my lord. And my lord, Who appears for the Vigilance Department? जी. No. He is appearing. Yes. ये विजिलेंस का केस तो नहीं है, 138 है, सेक्शन 420 है. विजिलेंस का इंक्वायरी रिपोर्ट पे ही पुलिस केस हुआ है. विजिलेंस ने इंक्वायरी किया और फिर पुलिस केस करा दिया. तो ये अपोज आप करेंगे या सरकार करेगी? दोनों का होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिपोर्ट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुन सकता हूँ. लेकिन टेक्निकली मिस्टर रामप्रिय शरण सिंह और मिस्टर असलम इज द करेक्ट पार्टी. आप स्पेशल विजिलेंस के हैं, तो विजिलेंस ने इंक्वायरी की. इंक्वायरी करने के बाद आपने केस तो फाइल किया नहीं, आपने रिपोर्ट दे दिया. बट स्टिल वी विल एक्नॉलेज योर प्रेजेंस. आप रहिए, यू विल टेल अस. बोलिए सर. लॉर्ड, भाई भाई में हुजूर एक दुकान था 88 में. FIR पढ़िए, वैसे बात नहीं. FIR हुजूर है एट पेज 30 पेज में लॉर्ड. इसको क्यों आपने, विजिलेंस ने क्यों ये प्राइवेट डिस्प्यूट को किया? एक मिनट मिस्टर अरविंद कुमार, ये प्राइवेट केस को विजिलेंस ने क्यों इन्वेस्टिगेट किया? इन्वेस्टिगेट नहीं किया हुजूर, इंक्वायरी किया. हाँ, किस बात के लिए? कंप्लेन एक लॉन्च हुआ. हाँ. कि फोर्स डॉक्यूमेंट पे कुछ एफिडेविट पे कुछ कार्य हुआ है वहाँ पे. तो अच्छा, आप इस तरह के कंप्लेंट एंटरटेन करते हैं? कंप्लेन अगर एफिडेविट पे आता है तो भी करना पड़ता है. All complaints you entertain? No, I am only asking for the SOP, because I get a feeling, this court is getting a feeling that there is some special interest of vigilance in this matter. A case of 420 dispute between two sides, and you are making an inquiry. It's a very extended mandate of yours, you can do, but have you noted while taking up the inquiry that it's a case where there would be large scale manufacture of fake documents, and therefore this needs to be inquired by a special police? Mr. Arvind Kumar, we would be recording our observation that the court is surprised as to under what circumstances the preliminary inquiry was made by vigilance in a case which is primarily between two parties and borders on civil dispute. Unless you say, you know the law there, unless you say that there is a larger conspiracy of bringing in on of fabricating documents which requires the presence of CBI or the vigilance or a special police to investigate, because it cannot be investigated by local police. They are only concerned with law and order. They cannot investigate such serious issues which requires a thorough understanding of the entire fact. You are justified. But ये क्या हुआ? किसी ने आपको, किसी ऑफिसर ने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करिए? वो एक कंप्लेंट फाइल हुआ जिसमें कहा गया यही था कि, माइक पर बोलिए, माइक पर. फोर्स डॉक्यूमेंट पे ये एफिडेविट पे ये हुआ है, जिसमें कि ये भाई भाई का ही है. 3 या 4 भाई हैं ये लोग. किसी एक भाई की कांटेक्ट विजिलेंस में है क्या? नहीं, ऐसा तो अदरवाइज इंक्वायरी तो इसमें नहीं होता. इट्स अ सिविल डिस्प्यूट. सिविल नहीं, फोर्स डॉक्यूमेंट का हम लोग इंक्वायरी. तो आपने क्या पाया? FSL में भेजे और वहाँ से आया कि हाँ, जो अर्जुन सिंह जिनके नाम से दुकान था, वो जो एफिडेविट किए हैं वो उनका दस्तखत नहीं. किस अथॉरिटी के तहत आपने ये किया? ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैसे किया आपने? कंप्लेंट पे. देखें आपकी, हाउ हैव यू इनिशिएटेड दैट कंप्लेंट एंड व्हाट इज द एंट्री? आई एम सरप्राइज्ड एट दिस. A specialized investigating unit is taking up a matter of dispute between two brothers. No, it was not between the two brothers, Your Lordship. वो तो बाद में हम लोगों की इंक्वायरी में आया कि हाँ, ये लोग 4 भाई हैं और ये आपस में ही उलझे हुए हैं. नहीं, आप ये प्राइवेट डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेट करते हैं विजिलेंस में? नहीं. जस्ट अ मिनट. विजिलेंस यूनिट PC एक्ट के लिए है एंड अदर कॉग्नेट मैटर्स इन IPC. तो हम लोग को जो कंप्लेन लॉन्च हुआ उसमें यही था कि फोर्स्ड एफिडेविट पे ये काम किया गया है. तो यू शुड हैव रिकमेंडेड इट टू द लोकल पुलिस स्ट्रेट अवे. ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपने कैसे टेकअप की, क्यों की? वी वुड लाइक टू नो. आई मीन, आई एम सरप्राइज्ड. गुड, you have so much of time to devote on private dispute, but you don't take up cases directed where it is necessary.
Now tell us, Mr. Arvind Kumar, who is the main person dealing with vigilance cases in the state of Bihar? The Director General Vigilance. We would like to know from him. Additional Director General. Additional Director General. We would like to know from him the regular standard operating procedure with respect to complaints, because this has aroused my interest and inquisitiveness. That a private dispute between parties, two brothers, is being investigated by CBI or Vigilance. Huh? ये बताइए जरा हमें अरविंद कुमार. You want to get into all this? You want to get into all this, or you want to wash your hands off it? हमारा तो केवल इंक्वायरी था, इंक्वायरी की रिपोर्ट हमने जो आपको बात कही जी हम बड़ा सॉफ्टली बोल रहे हैं. जी हम समझ रहे हैं. अगर आप इसको समझ रहे हैं तो मैं इसको इंक्वायर करूंगा. हुजूर अगर आप विजिलेंस के पदाधिकारी होके आप ये प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन टू ब्रदर्स को अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये दिस गिव्स मी द प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट यू. हुजूर हम तो बल्कि आउट ऑफ कोर्ट ये भी बोलेंगे हुजूर कि कई PIL में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है तो हम लोग का एफिडेविट आता है कि वी आर शॉट इन हैंड्स. बट जो हम बोल रहे हैं वही आप कह रहे हैं. और ये प्राइवेट जहां पर नौकरी मिलती है फोर्स्ड फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स पे, उसमें आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते. और ये प्राइवेट डिस्प्यूट दो भाइयों का है, इसमें आपने कह दिया. नहीं, हम लोग का ये नहीं आया था मैटर कि भाइयों के बीच का है. I mean, without hearing from you, I will not be recording all this. This would be extraneous in the order. But this is something which has not gone happily with me. It is not correct. Now we are not unnecessarily. It will get a traction of media. But there appears to be some motivating reason for taking up this inquiry. पुलिस का काम, जुडिशरी का काम निष्पक्ष होकर करना है. जी. आपने इसको जैसे ही आपने यू हैव स्टेप्ड योर फीट इनटू इट, आपकी निष्पक्षता जो है, इम्पार्शियलिटी कटघरे में खड़ी हो गई है. वी हैव नॉट इवन लुक्ड इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस. बट एनीवे, यू आर रिप्रेजेंटिंग द डिपार्टमेंट. वी डोंट नो व्हाई शुड यू बी एम्बैरेस्ड. Under on the basis of complaint, who initiated this inquiry? It was ordered from the SP order. Now let it. Who is the Additional Director General of Vigilance? SK Jha, Mr. SK Jha. Ask him to come. We will hear from him. Lots. And we will record our observations. देखिए साहब, अभी इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ कि छुट्टी का आज ही भर वीक है हमारा, एंड द मैटर शुड नॉट रिमेन पेंडिंग. अननेसेसरी ये हो जाएगा. बट डोंट डू दिस. इट इज नॉट डन अनलेस यू होल्ड इन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दैट देयर इज अ बिग रैकेट. No, it was not a big racket. I will submit. It was not a big racket. On a forced affidavit, the आप इस तरह फोर्स्ड एफिडेविट और कंप्लेंट इन अ सिविल डिस्प्यूट आप लोग ले रहे हैं इंक्वायरी? नहीं. तब हाँ. You are asking the court to repeat the same thing over and over again. देखिए, हाँ बोलिए साहब, क्या है एलिगेशन? जी वही एनेक्चर 4 जो लगाए हुए हैं, मेन क्रक्स है वही डिस्प्यूट का कि भाई में दुकान हमारे नाम पर भी होना चाहिए था. लिखिए, the petition heard Mr. धनंजय कुमार. धनेंद्र चौबे. धनेंद्र चौबे. क्या लिखा? धनेंद्र चौबे. धनेंद्र जो भी है. heard Mr. Dhanendra Chaube, learned advocate for the petitioner, Mr. Arvind Kumar, learned counsel for the vigilance, and Mr. Rampriya Sharan Singh for the state. The petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with section 420, in connection with Kochas PS case number 420. सासाराम टाउन PS केस नंबर. आपने लिखा है कोचस PS. आपने कोचस PS लिखा. सासाराम टाउन PS. तो फिर इसको करेक्ट करिए. ये केस नंबर तो गलत. यू विल हैव टू फाइल एन एफिडेविट. फर्स्ट पैराग्राफ में जो सासाराम टाउन कोचस है, कोचस. तो उसको जो करेक्ट कर देंगे. हालांकि है सासाराम टाउन. दिस डिफेक्ट कैनॉट बी रिमूव्ड लाइक दिस.
हुजूर इसमें भी यही हमारा पिटीशन है, यही जो भेजे। कोचेस नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 2 तरह का कॉपी दिया है। ठीक है, इसको छुट्टी के बाद सुनेंगे। इफ आई एम हियरिंग द मैटर वी विल इंक्वायर फ्रॉम द विजिलेंस। सासाराम दूसरा कर लग गया है क्या? फाइल ही दूसरा है। मृत्युंजय प्रसाद सिंह है जो नाम। 24,564 25,500 से गलत फाइल आ गया है। गलत Wrong file has come from the registry. Pass over. गलत फाइल आ गया है। Instead of 24564 of 2021, लॉर्डशिप 25564 has come. Pass over. Next. अच्छा दूसरा है। लास्ट में इसको नेक्स्ट केस, हाँ इनका पास ओवर। लास्ट में इसको रख दिया जाए, लास्ट में हुजूर क्या हुआ? लास्ट में इसको मंगा लिया जाए फाइल। नहीं, अब आ नहीं सकेगा, लिस्ट नहीं है ना। टाइम या पास ओवर के बाद अगले सप्ताह में जाएगा। हाँ मंडे को लगेगा, मंडे को लगेगा। यू मेंशन बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच। The bench may not question the vigilance, but nonetheless you will argue your case. हुजूर का माइंड ओपन था हुजूर, हमारा तो रिक्वेस्ट था कि अभी तो आ नहीं सकता। लास्ट में हुजूर 12:30 चलिए, 1 कॉल बजे करिए। जो नहीं भी है। पॉसिबल। All right, file was found. Call Mr. Vigilance. We will hear. Let him come. We will hear you. Sit. Yes, Mister. Come. The file is here. I will seek your indulgence, sir. I will file counter affidavit. आप करिए, हम इनको प्रोविजनल बेल दें। लिखिए, आप फाइल करिए। आप पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे बिना आपका व्यू पॉइंट सुने हुए। We will not make any adverse inference. We will hear your argument, but should you say so, you must respond. We can give notice to you why this case was investigated. Preliminary inquiry was made. You can make an inquiry. The power is plenary with you. It's all right. Lordship, it was not between the brothers. It was. It was not between the brothers. It was a Jila Parishad property which has been transferred. तो वो तो दूसरी बात हो गई। That's why इसीलिए हम लोग इंक्वायरी किए। तो इंक्वायरी करके क्या पाएगी? जिला परिषद की प्रॉपर्टी थी। हाँ। Where is that report? कंप्लेंट नहीं है। Where is that report? I will file counter affidavit. जिला परिषद की प्रॉपर्टी। Then have you and who has transferred that property to whom? जिला परिषद की प्रॉपर्टी है तो 2 भाइयों की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर उसमें आपने इन्वेस्टिगेट किया है तो आपकी जस्टिफिकेशन है। अब आप ये बताएं कि हु इज द वेंडर? इनेक्चर 4 हुजूर पेज 32 पर क्रक्स इसी का ही है। एफआईआर पढ़िए तो आप। एनीवे ये हम पार्टी बना देते हैं। फाइल योर। लिखिए, heard learned counsel, heard Mr. Dhanendra Chaube, learned advocate for the petitioners, Mr. Arvind Kumar, learned counsel for the vigilance, which has made a preliminary inquiry and has referred the matter to the general police for investigation of the case, and Mr. Rampriya Sharan Singh for the state. The petitioners seek bail in connection with Sasaram T PS case number so and so, instituted under section so and so. Let the informant be made party during the court. The counsel for the petitioner is permitted to add the informant as opposite party number 2 during the course of the day. इनको कॉपी दे दिया है, पार्टी भी इनको कॉपी दे दिया है इनको। कॉपी सर्विस करते हैं। That OP number 2, that the informant is permitted to be added as OP number 2. The accusation in the first information report is that one Surender Kumar Mawar, DSP Vigilance Investigation Bureau, communicated with the station house officer, Sasaram Police Station,
for lodging the subject FIR. First up. This communication was made on the basis of preliminary inquiry made on a complaint dated 23/8/2016 by one Lal Bahadur Singh. During the preliminary inquiry, it was found that shop number 15 was allotted to Arjun Singh, but in the year 2005, since the land over which the shop was situated belonged to Jila Parishad, the shops were settled, and this particular shop was transferred in favor of Mrityunjay Prasad Singh, who is petitioner number 1 in this case. The aforesaid transfer was on the ground of ill health of the original lessee, namely Arjun Singh, for which an application supported by an affidavit had been filed way back in the year 2005. The matter was in the know of Deputy Development Commissioner cum Chief Executive Officer of Jila Parishad, who was aware that the complainant was a co-sharer of the said shop. So be that as it may, during the course of preliminary inquiry, it was found that the shop which was transferred in the name of petitioner number 1 was based on a false and fake signature of Arjun Singh in connivance with the officers of the Jila Parishad. In connivance with the officers of the Jila Parishad. On the basis of the aforesaid preliminary inquiry, the subject of FIR was registered for investigation. When this case came up for consideration, this court expressed surprise as to how the complaint by a private party was entertained by the vigilance for making a preliminary inquiry. This court initially intended to call for the regular standard of procedure of entertaining such complaints by private parties in connection with a dispute which prima facie appears to be a civil dispute inter se the parties. However, but on finding that the preliminary inquiry was with respect to collusion of Jila Parishad authorities with a private property for transferring shops in favor of the petitioner, there appears to be some justification of the vigilance pitching in its inquiry in the said matter. Let notice be issued to OP number 2 on steps being taken by the petitioner within a period of 2 weeks, both modes, returnable on date dijia. 18th of July. 18th of July. The counsel for the vigilance, Mr. Arvind Kumar, shall file counter affidavit in this matter by the next date. Mr. Rampriya Sharan Singh, learned counsel for the state, shall go through the investigation papers and shall assist the court. First up, call for the case diary. Also in the meanwhile, first up,